Hello students, in the last video we have discussed the chemical reactions of glycols. Next reaction in that category is oxidative cleavage of carbon-carbon bond of glycols. This cleavage occurs in 1,2-glycols, or you can say when we have vicinal diol molecule. Vicinal diol molecule. That is, our OH groups are present on the adjacent carbon. The first example in this category is ethylene glycol. When we treat it with periodic acid, that is HiO4, or lead tetraacetate, cleavage of this carbon-carbon bond occurs and we get oxidized product, that is aldehyde molecule. In this case, we will get 2 aldehyde molecule. We can write like this. Now, what happens in this case? Whenever this carbon-carbon bond breaks, there is formation of one carbon-oxygen bond. That is, in this case, there will be formation of one carbon-oxygen bond. That is, we have carbon-carbon double bond, or you can write the expanded structure of formaldehyde like this. In this reaction, we can find the structure of the glycol molecule. Suppose we have 3 different types of glycol. One is prop-1,2-diol. Second molecule we have that is butane 2,3-diol. Third molecule we have prop-1,3-diol. Now we can predict using this reaction how many OH group are present in the molecule. Second thing, whether we can predict the structure of the molecule on the basis of identification of the product. We are saying oxidative cleavage occurs when we have vicinal diol molecule, that is 2 OH groups are present on the adjacent carbon. When we treat these 3 molecules, firstly we will treat with first molecule with periodic acid. In this case we will get formaldehyde. Here this cleavage occurs. Along with that we will get acetaldehyde. If our product is this one formaldehyde molecule, one acetaldehyde molecule, we will say we have prop-1,2-diol molecule. In the next case, again cleavage at this position occurs, we will get 2 acetaldehyde molecule. In the third case, as 2 OH groups are not present on adjacent carbon, or you can say these are not vicinal diol molecule, in this case we will get no product on this oxidation. So in this way, using oxidative cleavage, using periodic acid or lead tetraacetate, we are able to get the breakage of carbon-carbon bond and we can predict the product. Now, when we have to cleave 2 adjacent OH hydroxyl molecule to adjacent carbon which have OH group, we need 1 molecule of periodic acid. Suppose we have glycerol molecule. Glycerol is CH2, CHOH, CH2OH. In this case, we require 2 periodic acid molecules. That means, if we have N OH group on the adjacent carbon, we need N-1 HiO4 periodic acid molecule. In this case, we have 3 OH group on the adjacent carbon, we need 2 periodic acid molecule. Now, in this case, we have primary and secondary alcohol. On cleavage, we will get 2 formaldehyde molecules and 1 formic acid molecule.
On the basis of what product we are getting, we can able to predict the structure of the reactant. On the basis of how many periodic acid molecules are used in this reaction, we are able to predict how many OH groups are present in the molecule. Suppose we have glucose molecule. Glucose we have aldehyde. Then we have 5 carbon which has OH. 3, 4, 5. This molecule. In this case we have total 5 OH and this aldehyde. On treatment with periodic acid, what product we will get? All the secondary OH group will oxidize to carboxylic acid. Primary group will also oxidize to formaldehyde, and this aldehyde will oxidize to carboxylic acid. Which means in this case we will get this secondary alcohol, cross oxidation of this secondary alcohol, we will get 4 aldehyde, and this oxidation of these 4 secondary alcohol and this formaldehyde, we will get 5 formic acid molecule, and this primary alcohol will oxidize to 1 formaldehyde molecule. In this way we are able to predict the structure of the compound. Next we have fructose molecule. Fructose molecule, we have this structure CH2OH, C double bond O. Then we have CHOH. Then we have CH2OH. This molecule again on treatment with 5 periodic acid. These primary alcohols will oxidize to formaldehyde. In this case we have 2 primary alcohol. We will get 2 formaldehyde molecule. Secondary alcohol, these 3 secondary alcohol will oxidize to formic acid, and this carbonyl group will oxidize to carbon dioxide. So what product we are getting, on that basis we can able to predict the structure of the reactant molecule. Now how this reaction occurs? Mechanism part. Suppose we have glycerol molecule or ethylene glycol molecule. Here we have the structure of ethylene glycol. Our periodic acid, that is HiO4, on addition of 2 water molecules we will get H5IO6, which ionize to H positive and H4IO6 negative. Now this H4IO6 negative species reacts with ethylene glycol. Expanded structure of H4IO6 negative is we have 2 OH here in this side, 1 OH here, 1 OH group is here. Here we have double bond O negative. That is we have H4IO6 negative. This molecule on reaction with ethylene glycol gives us, after loss of 2 water molecules, form this complex. OH, O negative. Now this intermediate undergoes oxidative cleavage. That is, here double bond formation occurs. This bond cleaves to and form double bond here, and this here we will get the double bond and this bond breaks. We will get CH2 double bond O, that is 2 formaldehyde molecule, again CH2 double bond O, that is 2 formaldehyde molecule. Along with that, this molecule also undergoes loss of water, that is this H2. We will get IO3 negative molecule, that is IO3 negative molecule. Now this
IO3 negative molecules on treatment with silver nitrate give white precipitate of AgIO3. In this way, how many precipitate of this compound has been formed, और you can say हमारे पास यहाँ कितने molecules इसके बने हैं. We can predict हमारे यहाँ पे कितने periodic acid यूज हुए हैं. जितने periodic acid यूज हुए हैं उससे एक नंबर ज़्यादा हमारे पास, सपोज यहाँ पे n periodic acid यूज हुए तो हमारे पास उस मॉलिक्यूल में n+1 OH ग्रुप. तो इस रिएक्शन से हम किसी भी रिएक्शन की कोई भी जो हमारी विसिनल डायोज है उसकी 2 चीज़ें इजीली प्रेडिक्ट कर लेते हैं. वन इज उस केस में हमारे पास कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है. सेकेंड, हमारे पास OH ग्रुप की पोजीशन आपस में क्या है, क्या प्रोडक्ट हमारे पास बन रहे हैं. कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, फॉर्मेल्डिहाइड बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, रिएक्शन नहीं हो रही है. ये सब चीज़ों से हम इजीली प्रेडिक्ट कर लेते हैं. नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है pinacolone rearrangement. Pinacol, pinacolone rearrangement. अब इस केस में हमारे पास जो पिनाकोल मॉलिक्यूल है, पिनाकोल मॉलिक्यूल हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड विसिनल डायोल्स होती हैं. सपोज हमारे पास ये कंपाउंड है सब्स्टिट्यूटेड विसिनल डायोल्स. जब ये मॉलिक्यूल्स हमारे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, दिस मॉलिक्यूल इज पिनाकोल, रीअरेंज करते हैं और हमें कार्बोनाइल कंपाउंड देते हैं. दैट इज ये मॉलिक्यूल्स को हम पिनाकोलोन कहते हैं. अब इस केस में ऐसा क्या हो रहा है, एसिड की प्रेजेंस में, प्रोटॉन के प्रेजेंस में हमारा अल्कोहल मॉलिक्यूल प्रोटोनेटेड हो जाता है. अब इस केस में दोनों ही OH सिमिलर है, कोई भी हमारा OH प्रोटोनेटेड हो गया, दैट इज हमारे पास आ गया प्रोटोनेटेड अल्कोहल. प्रोटोनेटेड अल्कोहल वाटर लूज करेगी, हमारे पास कार्बोकेटाइन आ जाएगा. ये कार्बोकेटाइन में हमारे पास मिथाइल या हाइड्राइड या कोई भी अल्काइल एराइन शिफ्ट होगी. अब इस केस में मेरे पास ये ग्रुप यहाँ पे माइग्रेट हो गया, या ये वाला कोई भी हमारे पास होता है. अभी हम देखेंगे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड. अब इस केस में मेरे पास यहाँ पे CH3 पॉजिटिव चार्ज OH आ गया. ये लोन पेयर यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएंगे, O पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. ये आफ्टर लॉस ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास पिनाकोलोन प्रोडक्ट देगा. अब इस केस में हमारे पास कार्बोकेटाइन कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा. सपोज मेरे पास नेक्स्ट कंपाउंड इंस्टेड ऑफ ऑल फिनाइल ग्रुप, मेरे पास मिथाइल ग्रुप, हमारे पास फिनाइल एज वेल एज मिथाइल ग्रुप है. सपोज मेरे पास नेक्स्ट कैटेगरी ये वाली है. अब इस केस में मेरे कार्बोकेटाइन यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है कि मेरी कौन सी अल्कोहल की फ्लोटरेशन होती है. कार्बोकेटाइन वो बनना प्रेफर करेगा जो ज़्यादा एक्सटेंड तक स्टेबलाइज हो जाए. यहाँ पे कार्बोकेटाइन अगर बनता है इस पोजीशन पे, बिकॉज ऑफ 2 डोनेटिंग ग्रुप स्टेबलाइज होगा, ओनली प्लस साइन इफेक्ट से स्टेबलाइज हो जाए. यहाँ पे अगर बन रहा है तो वहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट हो जाए. हमें पता है रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेट करते हैं ओवर इंडक्टिव इफेक्ट. तो मेरे पास ये वाला कार्बोकेटाइन बनना प्रेफर करेगा, ये वाला कार्बोकेटाइन बनना प्रेफर करेगा, तो मेरे पास ये वाले OH की प्रोटोनेशन होगी. दैट इज फर्स्ट स्टेप मेरे पास प्रोटोनेशन हुई. सेकेंड स्टेप मेरा लॉस ऑफ वाटर हुआ. तो मैं दोनों स्टेप कंबाइन दिखा रही हूँ. मेरे पास कार्बोकेटाइन
ये वाला आ गया। देन उसके बाद हमारे पास है, अब दोनों में से कोई भी ग्रुप माइग्रेट कर सकता है। दैट इज मेरे पास CH3, कोई भी अल्काइल ग्रुप यहाँ पे माइग्रेट करे, चाहे मैं ये दिखा दूँ, मेरे पास C डबल बॉन्ड O, C6H5, C6H5, CH। अब इस केस में ये वाले बॉन्ड की ब्रेकिंग और ये वाला बॉन्ड फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली होता है। दैट इज जब ये बॉन्ड बनना शुरू होता है, ये बॉन्ड अभी कंप्लीटली ब्रेक नहीं हुआ होता। इट मीन्स इस केस में हमारे पास स्टीरियोकेमिस्ट्री मॉलिक्यूल की वही रहती है। अगर मेरा ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाए फिर बाद में ये यहाँ अटैच हो, तो मेरे पास कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट है, अटैक दोनों साइड से हो सकता है, रेसमिक मिक्सचर बनेगा। बट हमारा इस केस में रेसमिक मिक्सचर नहीं बनता, हमारी स्टीरियोकेमिस्ट्री वही रहती है। उसके बेसिस पे हम इजीली कह सकते हैं इस केस में यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्व होती है, साइमल्टेनियस हमारे पास बॉन्ड ब्रेकिंग है, बॉन्ड फॉर्मेशन। अभी हमने डिस्कस करा मेरे पास कौन सी OH ग्रुप की प्रोटोनेशन रहेगी और कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा। देन उसके बाद अगर मेरे पास 2 डिफरेंट R ग्रुप प्रेजेंट है, माइग्रेशन मेरे कौन सी ग्रुप की होगी। यहाँ पे तो मेरे दोनों ही मिथाइल ग्रुप थे ना, दोनों में से कोई भी मिथाइल ग्रुप मेरा माइग्रेट हो सकता है। बट अगर मेरे डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट हो, सपोज मेरे पास C6H5, C6H5 के साथ मेरे पास कोई और ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे भी मेरे पास कोई ग्रुप लगा हुआ है, ये C6H5। अब इस केस में मेरे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा। सबसे पहले कार्बोकेटाइन दोनों ही किसी भी कार्बन पे बन सकता है, बिकॉज दोनों की स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम है, दोनों ग्रुप्स मेरे एग्जैक्टली सेम है। सपोज मेरा दोनों में से किसी भी पोजीशन पे कार्बोकेटाइन बन गया, दैट मीन्स जो हमारे 2 स्टेप हुए, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल एंड लॉस ऑफ वाटर से मेरे पास सपोज कार्बोकेटाइन की ये स्ट्रक्चर आ गया। अब मेरे पास ये दोनों ग्रुप में से माइग्रेशन हो सकते हैं। मेरे पास जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है कौन से ग्रुप का ज़्यादा है, मेरे पास फिनाइल ग्रुप प्रेफर करेगा माइग्रेट होना एज कंपेयर टू अल्काइल ग्रुप। अगर मेरे पास एक कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगा है, एक पे फिनाइल लगा है, तो हमेशा फिनाइल ग्रुप मेरा माइग्रेट होगा। और अगर मेरे पास फिनाइल ग्रुप में भी सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट है, तो फिनाइल ग्रुप जहाँ पे डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं, दैट इज फिनाइल के साथ OCH3, उसकी प्रेफरेंस होगी। अब मेरे पास यहाँ पे एक फिनाइल है, दूसरे केस में फिनाइल के साथ डोनेटिंग ग्रुप लगे, तो मेरे पास इस ग्रुप की प्रेफरेंस होगी, इस ग्रुप की प्रेफरेंस होगी, तो मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, C6H5 OCH3 में दिखा रही हूँ, सॉरी 4। ऐसे ये वाला ग्रुप मेरा यहाँ पे शिफ्ट हुआ, C6H5 OCH3, ये हमारा यही ग्रुप हुआ ना, C6H4 OCH3। देन मेरे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड C6H5 प्रोडक्ट। इट मीन्स हम इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं किस कार्बन पे कार्बोकेटाइन बनेगा। और मेरे पास अगर मैं इसकी एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर ही बनाऊँ फॉर मोर क्लैरिटी, मेरे पास C6H5 CH3, यहाँ पे भी मेरे पास वही ग्रुप आ गया, यहाँ पे मेरे पास डबल बॉन्ड C6H5 हो जाएगा। इट मीन्स मेरे पास माइग्रेटरी एप्टीट्यूड डिफरेंट ग्रुप्स का क्या क्या आ गया, क्या ऑर्डर आ गया। सबसे पहले मेरे पास एरोमेटिक रिंग पे अगर डोनेटिंग ग्रुप लगे, फिर उसके बाद मेरे पास एरोमेटिक रिंग आ गई, फिर मेरे पास एरोमेटिक रिंग पे अगर विथड्रॉइंग ग्रुप लगे, तो मेरे पास ये ग्रुप आ जाएगा। और अगर मेरे पास एरोमेटिक और अराइल ग्रुप का मैं कंपैरिजन करूँ, तो मेरे पास एरोमेटिक के अल्काइल और एरोमेटिक में एरोमेटिक ग्रुप इजीली माइग्रेट करेगा ओवर अल्काइल।